हेलो एवरीवन, वेलकम टू MatSci Odia। मो बसंत सार समस्त स्वागत जनाऊे आज एक नुआ वीडियो को। आज क्लास रे आमे डिस्कशन करिया जाऊे परीक्षा दर्पण 2025 रो इंग्लिश रो ऑल 5 सेट्स रो क्वेश्चन। ए गोटे क्लास रे तमनको टोटल 5टा जाक सेट रो 250 टा एमसीक्यू क्वेश्चन रो डिस्कशन मिल जिवो। ए गोटे वीडियो को देखिबा द्वारा पूरा इंग्लिश रो इंपोर्टेंट क्वेश्चन सब तमनकर कवर हो जिवो। तेणु करिक निश्चित भाव में वीडियो को शेष पर्यंत देखिबो एवं तुम सांगसाथी मान सहित क्लास को शेयर करदेव। ठीक अच्छे, तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम चलो स्टार्ट करबा हमर आज क्लास को। जीवा हमें परीक्षा दर्पण इंग्लिश रो फर्स्ट सेट को। तो फर्स्ट सेट रो फर्स्ट 50 टा क्वेश्चन को आगे डिस्कशन करदेवा। चलो सेट 1 रो क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट अकॉर्डिंग टू सीएफ अलेक्जेंडर शुड आवर लिप्स टेल। हमरो लिप्स कौन पाई अच्छे अकॉर्डिंग टू सीएफ अलेक्जेंडर ऑल थिंग्स ब्राइट एंड ब्यूटीफुल रो हमरो लिप्स अच्छी so that we can tell how great is God Almighty. So God is great. Option A is the correct answer. Find the odd season out as mentioned in the poem All Things Bright and Beautiful. All Things Bright and Beautiful रे को सीजन कथा कही नाहंती। तो सी कही प्लीजेंट समर सन, कोल्ड विंड इन द विंटर, माने विंटर आउ समर विषय कही किंतु ऑटम सीजन विषय से कही नाहंती। तो ऑप्शन सी ऑटम ही जीवो ऑड वन। ठीक अच्छे, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा। नेक्स्ट क्वेश्चन कही व्हाई डज द ऑथर राइट द हाउस बट नॉट ए हाउस एज डिस्क्राइब्ड इन द स्टोरी ए लेटर टू गॉड। ए लेटर टू गॉड रे से द हाउस कहीं कहते, द हाउस कहीं कहते, अ हाउस कहीं कही नाहंती। तो सिंपल जेहेतु लेंचर हाउस गोटे मात्र थिला, एक मात्र घर थिला से वैली रे, सेथिपई ताकू द हाउस बोली कहाइछे। यूनिक जिंस को द लागे, राइट। सो इट वाज द ओनली हाउस फाउंड इन द एंटायर वैली। ऑप्शन बी ये हिजबा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न को जिबा। क्वेश्चन नंबर 4, व्हिच स्टेटमेंट जस्टिफाइज लेंचोस डीप फेथ एंड कॉन्फिडेंस हेल्प हिम ओवरकम हिज मिसफॉर्च्यून इन लाइट ऑफ द स्टोरी ए लेटर टू गॉड। तो लेंचर डीप फेथ आउ कॉन्फिडेंस जहा द्वारा कि ताकू हेल्प मिलिथिला को स्टेटमेंट ता ताकू जस्टिफाई करूचे। फर्स्ट, पोस्टमास्टर डिसाइडेड टू आंसर लेंचोस लेटर ऑन बिहाफ ऑफ गॉड। एब्सोल्युटली ठीक। ही कलेक्टेड मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज एंड हिज फ्रेंड्स टू हेल्प हिम। एब्सोल्युटली ठीक। सेंट 70 पेसोस टू लेंचो ऑन बिहाफ ऑफ गॉड। तीनटा जाक ठीक अच्छे, तेणु करी आंसर हे ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट प्रश्न को जब देखिबा हमें क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डज द फ्रेज हम्बल ले मीन। हम्बल ले रो अर्थ कौन। हम्बल ले रो अर्थ होची ऑर्डिनरी सॉन्ग। सॉलिटरी रिपर पाठर आसीचे। हम्बल ले मीन्स द ऑर्डिनरी सॉन्ग, साधारण गीत दैनंदिन जीवन रो। नेक्स्ट, द एक्सप्रेशन द प्लेंटिव नंबर फ्लोज रिफर्स टू डैश। प्लेंटिव नंबर रो अर्थ कौन। प्लेंटिव नंबर रो अर्थ होचे सैड म्यूजिक। प्लेंटिव मीन्स सैड इमोशन। ओके, तो सैड म्यूजिक ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आई एम स्टिल पेइंग द पेनल्टी ऑफ एनदर नेग्लेक्ट। व्हाट काइंड ऑफ नेग्लेक्ट इज गांधीजी सेइंग अबाउट। एनदर नेग्लेक्ट कथा कहउचंदी। फर्स्ट नेग्लेक्ट थिला तांके फिजिकल एक्सरसाइज बा स्पोर्ट्स करनथिले। सेकंड नेग्लेक्ट तांकर थिला तांकर हैंडराइटिंग, बैड हैंडराइटिंग। हियर गांधीजी इज टॉकिंग अबाउट हिज बैड हैंडराइटिंग। नेक्स्ट वन, Gandhiji retained the notion that good handwriting was not a necessary part of education until dash। गांधीजी को जो धारणा थिला जे भलो हैंडराइटिंग गोटे एजुकेशन रो पार्ट नुहे, से धारणाटा केबे पर्यंत थिला जो पर्यंत से इंग्लैंड जाई नथिले। इंग्लैंड गलारु तांगर धारणा परवर्ती समय रे चेंज हेतिला। तो ही वेंट टू इंग्लैंड। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, एट लीस्ट टेक ए सजेशन और टू फ्रॉम मी said grandfather to dash। at least take a suggestion or two। मो ठारू गोटे दीटा सजेशन तुमको नबार उचित बोली से कहिथिले। काहा कहिथिले जेतोले सेकंड जू कीपर आस्थिला ताकू ग्रैंडफादर कहिथिले, हैला। टाइगर इन द हाउस पाठ। व्हाई डिड ग्रैंडफादर वर्क ब्रिस्कली आउट ऑफ द जू। जू रु से माने तरतर होइकी बाहरी पड़ले काहे की। ही गॉट एंग्री विथ द कीपर। जो जू कीपर थिला ताहा सहित रागी की ता ऊपर रागी की से
तो रागरे ब्रिस्कली चलिकी पड़े गले. नेक्स्ट वन, द गर्ल प्रिफर्स फॉरेस्ट नोट्स टू ब्राइडल सॉन्ग्स बिकॉज डैश. ब्राइडल सॉन्ग अपेक्षा झीटा फॉरेस्ट नोट्स को बेसी प्रिफरेंस दौला कहीं ना द म्यूजिक प्लेड बाय द ह्यूमन बीइंग इज स्वीटर. भूल. ट्रेडिशनल म्यूजिक हैड इट्स ट्रेमेंडस इफेक्ट ऑन ह्यूमन बीइंग. भूल. द म्यूजिक ऑफ नेचर अट्रैक्ट्स द गर्ल. ये हिजबो करेक्ट आंसर. म्यूजिक रो जो नेचर रो म्यूजिक अच्छी प्रकृति रो गीत अच्छी सेटा बेसी अट्रैक्ट करूला से झील को. तो ऑप्शन सी हिजबो करेक्ट आंसर. द म्यूजिक ऑफ द नेचर अट्रैक्ट्स द गर्ल. नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 12 को जीवा. Which of the following expression has been used by the daughter in village song to express loss or sorrow? Loss और sorrow को कहबा पई कोन कहितला से? Loss and sorrow को कहितला से wind of death. The laughter of the sun today, wind of death tomorrow. तो wind of death refer करूची loss and sorrows of life. Next, cadences of sorrow. Choose the correct alternative to understand the line or phrase. Cadences of sorrow रो अर्थ कोन? दुखर धुन बा दुखर लय. राइट. Pleasure and pain comes periodically. Pleasure and pain comes simultaneously. Pleasure and pain comes randomly. Pleasure and pain comes spontaneously. तो ऑप्शन ए हिजबो करेक्ट आंसर एठी. प्लेजर एंड पेन कम्स पीरियडिकली बा निर्दिष्ट समय अंतराल रे जीवन रे दुख सुख सब बेले लागी रहिथिबो से अर्थ रे कुआ होचे. नेक्स्ट, which of the following statement shows that the master in the flower school is a hard task master? को स्टेटमेंट टा दर्शाउची जे फ्लावर स्कूल रो जो मास्टर अच्छी से हार्ड टास्क मास्टर हेथिबो, बहुत स्ट्रिक्ट हेथिबो. को लाइन, he makes them kneel down on the veranda, he makes them sit in the room, he makes them stand in a corner, he makes them stand outside. तो करेक्ट आंसर कौन हम ये पिलाने? he makes them stand in a corner. गोटे कोण रे सेमान को रखी देउतला बा ठिया कर देउतला. राइट. नेक्स्ट, Rongali Bihu is celebrated in mid-April in Assam. Which festival in Odisha makes the start of Odia New Year? जमती आसाम रे न्यू ईयर पालती रंगाली बिहू मिड एप्रिल रे. से समय रे आमर ओडिशा रे को न्यू ईयर पालन करा जाए? ओडिशा रे पालन करा जाए महाविश्व संक्रांति, पणा संक्रांति. तो ऑप्शन ए हिजबो करेक्ट आंसर. You read the topic, the festival of Northeast India. Your friend has formed an indie band. He is interested to take part in dash in Arunachal Pradesh. अरुणाचल प्रदेश रे गोटे फेस्टिवल हुए जोटा को जाइरो फेस्टिवल बा जीरो फेस्टिवल कहा जाए. जीरो फेस्टिवल रे इंडिया रो सबु इंडी बैंड बा इंडिपेंडेंट बैंड गुडा को पार्टिसिपेट करंती. तो ऑप्शन सी हिजबो करेक्ट आंसर. नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 17. Why are 7 states called the land of 7 sisters? नॉर्थ ईस्ट इंडिया रो 7टा स्टेट को 7 सिस्टर्स कहीं कहा जाए? बिकॉज ऑफ देयर इंटरडिपेंडेंस. से माने परस्पर ऊपर निर्भरशील, सेतिपय लैंड ऑफ 7 सिस्टर्स कहा गला. which is the right way for abolishing the practice of begging completely in our country? देश रे जो बेगिंग अच्छी भिकारी बा भिक मागिबा वृत्ति अच्छी ताको बंद करबा केमती? by providing them employment. समस्त को जदी काम दे दिया जिवो, एम्प्लॉयमेंट दे दिया जिवो, ताहले begging can be abolished. Luskov bowed to Sergei and departed to the gallery. What do you think about Luskov from his behavior? ए behavior रो तमे Luskov को विषय रे कोन बुझुचो? He is humble and polite, he is rude and courageous, he is simple and innocent, he is simple and sincere. He is humble and polite. से बहुत humble और polite थिला, सेतिपय से धनी हे गला परे भी भल रोजगार कला परे भी से सेर्गी को भूली जाई नथिला, तांको आगरे मुंडो नुई की से गैलरी को गला. नेक्स्ट, एज स्टेटेड बाय द बेगर, ही वाज सेंट अवे फ्रॉम द रशियन चॉयर फॉर डैश. तारो ताकू रशियन चॉयर रो काहे की बाहर कर दिया जाइतला? बिकॉज ऑफ हिज ड्रंकनेस. नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पाई चार्ट रिप्रेजेंट द कंपोजिशन ऑफ प्योर एयर? प्योर एयर रो कंपोजिशन कोटा? तमे देखिबो ऑप्शन बी टा ठीक अच्छे. ऑप्शन बी कोटा ना 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन, 1% argon and 0.03% CO2. This is the actual composition of pure air. Next one, which statement is not
अ स्टेटमेंट ऑफ जुमन शेख। जुमन शेख रो स्टेटमेंट कोटा नथिला। मनी डज नॉट ग्रो ऑन ट्रीज हियर ये कहितला ओल्ड आंट को। लेट इज बी अलगू चौधरी, लेट इट बी अलगू चौधरी ये भी कहितला जुमन शेख। इट इज योर्स सो हैव एनीवन यू लाइक ये भी ओल्ड आंट को कहितला। लॉन्ग लिव द गॉड दैट इज द पंच ये कहि नथिला। ऑप्शन डी हे जिवो करेक्ट आंसर। लॉन्ग लिव द गॉड दैट इज द पंच ये कहितला हमरो ओल्ड आंट। ठीक अच्छे, ओल्ड आंट एटा कहितला। तेणु करी ऑप्शन डी हे करेक्ट आंसर। आगो को while returning from the market समझू साहू brought dash which he then sold in the village। से गला बेल को मार्केट को घी एंड सुगर नौला, आसला बेल को सॉल्ट एंड ऑयल आनुला, सॉल्ट एंड ऑयल। तो ऑप्शन डी सॉल्ट एंड ऑयल इज करेक्ट आंसर। which statement gives the clue that the old man was able to walk and play physically fit। तो ओल्ड मैन एंटर्ड वॉकिंग इजिली विथआउट क्रचेस बिना क्रच रे बिना आशाबाड़ी रे इजिली चलिकी आसला राजा पाख को। एथरो जना पड़ुछि से पूरा पूरी फिट थिला फिजिकली। वन डे सम ऑफ द चिल्ड्रेन फाउंड अ ग्रेन ऑफ कॉर्न इन ए रेविन। तो ये जो रेविन अर्थ अच्छे फाइंड आउट द मोस्ट सुइटेबल मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। अंडरलाइन वर्ड होछि रेविन। रेविन रो मोस्ट सुइटेबल कौन मीनिंग कौन हम? रिवर बैंक, डीप रिवर, वेरी डीप नैरो वैली। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, वेरी डीप नैरो वैली। नेक्स्ट वन, which of the following programs has not been suggested by the author to reduce air pollution। एयर पोल्यूशन को रिड्यूस करिया पे कौन कौन कोटा कहि नथिले। the government has introduced clear fuels like CNG and LPG, burning low sulfur कहिथिले, automobile engine have been redesigned कहिथिले, catalytic converter लगाही कि, न्यू कार्स हैव बीन इक्विप्ड विथ कैटालिटिक कन्वर्टर एटा भी कहैथिला। तीनटा जाक कहिसंती किंतु जो सीएनजी एलपीजी कथा ऑथर कहि नाहंती। तो ऑप्शन ए हिजवा करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट 27 हियर विकीज ब्रेन इज डिस्प्लेड। विकीज ब्रेन कहा होची हाय आई एम विकीज ब्रिलियंट ब्रेन। नाउ हियर विकीज ब्रेन इज डिस्प्लेड कोन पई विकी रो ब्रेन को रखा हिथिला। For the visitors to stare, for visitors to enjoy, for learners to glance, for the learners to gain knowledge। learner माने ताकू देखी कि knowledge gain करिवे सेति पे रखा हितला। So option D is the correct answer। Which of the following is not an effect of acid rain? acid rain रो effect कोटा नुहे। effect washes away nutrients from soil, yes। traps the radiation that reaches the earth, no। irritates the sensitive tissue, yes। affects stone building and mountain। ए सी आउ डी होची इफेक्ट किंतु ऑप्शन बी ट्रैप्स द रेडिएशन दैट रीचेस द अर्थ एटा ग्लोबल वार्मिंग ग्रीन हाउस इफेक्ट रो कमाल बा ग्रीन हाउस इफेक्ट रो काम। तेणु करी एसिड रेन रे एटा हबो ऑड वन, एटा हबो भूल। तो ऑप्शन बी ठीक आंसर। नेक्स्ट, द ब्रेन सेज आई वाज अ पार्ट ऑफ ए लिविंग ह्यूमन 2 years ago। अंडरलाइन फ्रेज रिफर्स टू डैश। ए लिविंग ह्यूमन जो कहैछि से काह कहैछि? विकी को कहैछि। विकी को कहैछि जे विकीज ब्रेन कहूँ आई वाज पार्ट ऑफ ए लिविंग ब्रेन। तो विकी कथा से कहूँ। नेक्स्ट वन, स्मोकिंग इन यूथ डैश द बॉडी एंड डैश द ब्रेन। स्मोकिंग इन यूथ स्टंट्स द बॉडी एंड क्लाउड्स द ब्रेन। स्टंट्स द बॉडी एंड क्लाउड्स द ब्रेन। स्टंट क्लाउड भी अच्छे एटा हबनी एस लागिवो काहे कि एटी थर्ड पर्सन सिंगुलर रे कहूँ। स्मोकिंग थर्ड पर्सन सिंगुलर तो verb रे एस रो व्यवहार हबो। 31 द एनुअल एचएससी एग्जामिनेशन डैश ऑन 21 February 2025। तो एटा तुम जदि देखिबो एटा होची गोटे प्लान्ड एक्शन, गोटे पूरा पूरी शेड्यूल हेकी अछि, फिक्स अछि। तो फिक्स शेड्यूल पे हमें प्रेजेंट सिंपल व्यवहार करू, दैट्स व्हाई बिगिंस हे जिवो ठीक आंसर। द एनुअल एचएससी एग्जामिनेशन बिगिंस ऑन 21 February 2025। नेक्स्ट, द क्रिकेट मैच इज ओवर, ही डैश होम बाय 5 o'clock। द क्रिकेट मैच इज ओवर, ही डैश होम से he will have reached home by 5 o'clock। 5टा भितरे से पहुंची जाइथिबो से अर्थ रे हला will have reached। pick out the correct grammatical sentence। not only the boy but also his friends is guilty। एठी भूल हे गला देखो, not only but also लागिले जो सेकंड नाउन थिबो ता सहित एग्री करिवो। the boy or his friends has, friends अछि ना प्लुरल को सिंगुलर वर्ब हबनी। neither the boy nor his friend are playing cricket। एटा भी भूल हो। हिज फ्रेंड सिंगुलर अच्छे ये प्लुराल लगी। तो डी हम आमर ठीक आंसर, आइदर यू और ही हैज टेकन माय पेन।
तो आइदर और रे सेकेंड टा संगे एग्री करिवो सब बेले आइदर और नीदर नॉर नॉट ओनली बट आल्सो बोथ एंड और ए सब थिले वर्ब एग्रीज विथ द सेकेंड नाउन तो सेकेंड नाउन आमर धरिकी सिंगुलर के प्लुरल हबो जोटा कि डी ऑप्शन रे ठीक अछि नेक्स्ट वन ही कॉल गांधी फादर ऑफ नेशन पैटर्न ऑफ दिस सेंटेंस इज डैश वी कॉल गांधी वी सब्जेक्ट कॉल वर्ब वी कॉल हुम गांधी तो इटा हिजबो आमर ऑब्जेक्ट आउ फादर ऑफ नेशन ये गोटे एक्स्ट्रा पार्ट तेणु करके ये कॉम्प्लीमेंट आकार व्यवहार होचे तो एस भी ओ सी हिजबो करेक्ट आंसर सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ओके नेक्स्ट the subject teaches in addition to A1 aspirants dash attended today's remedial class the subject teacher in addition to A1 aspirant in addition to together with ए सब रे जदी कनेक्ट हेथिबो दुटा नाउन वर्ब एग्रीज विथ द फर्स्ट नाउन तो एठी द सब्जेक्ट टीचर सहित एग्री हबो हैज अटेंडेड सिंगुलर वर्ब हबो हैज अटेंडेड ठीक अछि जेहेतु सब्जेक्ट टीचर को हला एस्पिरेंट्स को लागितले प्लुरल हेथांता ठीक अछि इन एडिशन टू थिले फर्स्ट संगे एग्री करिवो आई हैव लॉट ऑफ फ्रेंड्स बट नन ऑफ देम डैश अटेंडेड माय बर्थडे पार्टी एठी देखो आई हैव लॉट ऑफ फ्रेंड्स बट नन ऑफ देम ईच ऑफ वन ऑफ नन ऑफ ए जदी ए गुडा को जदी थिबो ताले वर्ब सब बेले सिंगुलर हबो तेनु करके नन ऑफ देम हैज अटेंडेड माय बर्थडे पार्टी इज करेक्ट आंसर नेक्स्ट वन I did not notice them dash down the tips. I did not notice them note down the tips. Note down. Non-finite verb note down habo. Okay. Unless you write in good handwriting, you dash good marks. एटा conditional clause अच्छे जो पर्यंत तमे ठीक रे लिखिबो नै you will not get good marks. You will not get good marks. तो if not अर्थरे unless रो व्यवहार हुए ठीक अच्छे तो ऑप्शन बी है जो करेक्ट आंसर नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 39 इट इज सेड दैट डैश इज बेटर देन क्योर प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर नाउन आकार व्यवहार हिचे पिक आउट द करेक्ट ग्रामेटिकल सेंटेंस 40 नंबर यू वर मेड टू स्टैंड अप यू वर मेड स्टैंड अप यू आर मेड स्टैंड यू हैव मेड स्टैंड अप यू हैव मेड तो यू वर मेड टू स्टैंड अप ओके ये हबो तमनकर पैसिव फॉर्म ओके तो ऑप्शन ए हिजबो करेक्ट आंसर द एग डैश इफ शी हैड नॉट ड्रॉप्ड इट द एग would not have broken if she had not dropped it एटा होची कंडीशनल क्लॉज थर्ड कंडीशनल अनफुलफिल्ड कंडीशन पास्ट रो अनफुलफिल्ड कंडीशन एठी इफ क्लॉज रे तमनकर पास्ट परफेक्ट लगे हैड ड्रॉप्ड आउ मेन क्लॉज रे वुड हैव वर्ब रो थर्ड फॉर्म लागि थाए तो वुड हैव हिजबो करेक्ट आंसर इट इज टाइम टू रिंग द बेल इट कैन बी पैसिवाइज्ड एज आको पैसिव कले कोन हबो इट इज टाइम टू रिंग द बेल इट इज टाइम फॉर द बेल टू बी रंग ओके नेक्स्ट वन पीपल सेड दैट ही वाज a sincere teacher it is he is said to have been a sincere teacher option b is the correct answer he is said to have been a sincere sorry is habani was अछि ना तो b habani c habo he was said to have been a sincere teacher option c okay next one Mita said let's play cricket tomorrow it can be changed into reported speech Mita suggest करछु ना let's play cricket तो मिता सजेस्टेड कौन टू प्ले क्रिकेट टू प्ले जेहेतु आमर कौन इंपेरेटिव सेंटेंस अच्छे ताको पैसिव कले टू प्लस वर्ब रो फर्स्ट फॉर्म लगी थाए तो मिता सजेस्टेड देम टू प्ले क्रिकेट द नेक्स्ट डे ऑप्शन बी इज जो करेक्ट आंसर ओके नेक्स्ट वन 45 द बिलीफ दैट फेट रूल्स आवर लाइफ इज वेरी कॉमन अंडरलाइन क्लॉज फंक्शन एज डैश द बिलीफ दैट फेट रूल्स द बिलीफ जहा ये भी ताहा कहूचे तो ये जो नाउन क्लॉज अच्छी दिस इज इन अपोजिशन टू अनदर नाउन फ्रेज ए टीचर्स टीचिंग शुड नॉट बी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड द अंडरलाइन वर्ड कैन बी रिप्लेस्ड बाय डैश अंडरस्टैंड पे फ्रेजल वर्ब कौन रे मेक आउट मीन्स टू अंडरस्टैंड
there is still no cure dash AIDS, there is no cure for AIDS, okay, for AIDS. Next one, he has resigned from his job, which is surprising. now ये जो underlined word अच्छी ये को प्रकार रो clause, he has resigned from his job, ये पूरा sentence को identify करुचे which is surprising. It is a non-defining relative clause. Raju ran so fast that he won the match. ये को प्रकार क्लॉज बोली कहूचे. एडवर्ब क्लॉज, राजू रन सो फास्ट दैट ही वन द मैच, सी जीति गला, तार एटा रिजल्ट आसिला, राइट. तो एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट, ऑप्शन सी. नेक्स्ट, आई सॉ हर क्रॉस द रोड. द फंक्शन ऑफ द सबऑर्डिनेट, द अंडरलाइन नॉन फाइनाइट वर्ब कौन हबो? आई सॉ हर क्रॉस द रोड. एठी को प्रकार व्यवहार करा होचे. आई सॉ हर टा होचे ऑब्जेक्ट, आउ जो क्रॉस द रोड अच्छे, ये जो क्रॉस अच्छे ये तुम मानकर कॉम्प्लीमेंट आकार व्यवहार होचे, ये खाली सेंटेंस को कंप्लीट करिया पे यूज होचे. तो ऑप्शन सी कॉम्प्लीमेंट हो करेक्ट आंसर. ये थिला इंग्लिश रो सेट 1 जो थरे कि हम माने 50 जाक क्वेश्चन को रिवाइज कले बा 50 क्वेश्चन को डिस्कशन कले. नेक्स्ट आमे जिबा सेट 2 को. सेट 2 रे कौन अच्छी देखिबा. तो गिव मी 1 सेकेंड, मु सेट 2 ओपन करूची पिलाने. सेट 2 अच्छी पेज नंबर 91 रे. ओके, ऑलराइट. सेट 2 ऑब्जेक्टिव टाइप. फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द थीम ऑफ द पोएम ऑल थिंग्स ब्राइट एंड ब्यूटीफुल? ऑल थिंग्स ब्राइट एंड ब्यूटीफुल रो थीम कौन? All things bright and beautiful रो theme होचे about our gratitude to God for his wonderful creation. Option A. ठीक है. What is the rhyming scheme of the poem All Things Bright and Beautiful? In the first stanza रे तारो writing scheme केमिति अच्छे? First stanza रे AB format रे अच्छे. एटा कौन ना first line रो शेषो word rhyme करुची third संगरे, second तारो शेषो word rhyme करुची fourth संगरे. तो ए बी राइम करूनी, ए को ए राइम करुची, बी को बी, माने फर्स्ट टा थर्ड संगे राइम करुची आउ सेकंड टा फोर्थ संगे राइम करुची. तो ए बी फॉर्मेट हबो एटा. ठीक अछि. नेक्स्ट, व्हाट मैटर पुट गांधी जी टू सेम? को मैटर गांधी जी को सेम करथिला बा लज्जित करथिला? हिज काइंडनेस ऑफ हिज संस्कृत टीचर. तांको संस्कृत टीचर रो काइंडनेस तांको लज्जित अनुभव करथिला. According to Krishna Shankar Pandya, as a Vaishnav, learning of dash should not be ignored. तांगरो कृष्णा शंकर पांड्या होतले संस्कृत टीचर, से कहिथिले गांधी जी को एज ए वैष्णव यू शुड ऑलवेज लर्न संस्कृत निश्चित भाव रे जानिबार अच्छे. नेक्स्ट, गॉड सेंड मी द रेस्ट सिंस आई नीड इट वेरी मच. रेस्ट रो अर्थ कौन है? तो रेस्ट माने होचे जेतबे लेंचो सेकंड लेटर लिखिथिला फर्स्ट तारे परे 70 पेसोस ताकू पोस्ट मास्टर पठेइथिला, बाकी 30 पेसोस पई से आउथर कहिथिला जे सेंड मी द रेस्ट. तो ऑप्शन ए हिजबो करेक्ट आंसर. नेक्स्ट वन, व्हाट थॉट रिफ्लेक्ट्स लेंचोस कॉन्फिडेंस इन गॉड व्हेन ही रिसीव्ड ओनली 70 पेसोस? से जेतबे 70 पेसोस पाइला से कोन भाबिला? से कहिला गॉड कुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक. भगवान केबे भी मिस्टेक कर नथिबे, ए पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय माने ही खाई देथिबे टंका बोली, राइट. तो ऑप्शन कोन हबो? एटार ऑप्शन सी हिजबो करेक्ट आंसर. ओके. नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 7, ग्रैंडफादर यूज्ड टू स्टॉप तिमोथी ग्रोल बाय डैश. ग्रैंडफादर तिमोथी को केमिति रोकुथुले? से जतबे ग्रोल करथुला ही वाज स्मैकिंग हिम अक्रॉस द माउथ. Which situation finally compelled grandfather to transfer Timothy to Jew? Jew को ट्रांसफर करिया पे को इंसिडेंट ता तांको कंपेल करथिला बा बाध्य करथिला? When he began to stalk Mahmud with a villainous intent. गुटे villainous look सहित जेतबेले महमूद को देखिबार आरंभ कला सेतबेले से देखिले ना आकु आउ संभाली हबनी, आकु नै जिबा जू को. What is the tone of the poem Solitary Reaper? Solitary Reaper poem रो टोन होची सैड टोन, हला दुखित टोन रे.
The expression breaking the silence of the sea, the solitary reaper refers to dash. Breaking the silence of the sea कहाँ पे कुआ है the farthest Hebrid. Farthest Hebrid रे जो sound थिला जोटा सेटा कि हमरो silence of the sea को break करतुला भांगुतुला. Next one. Suppose you were a flower in the poem The Flower School. What message would you give to the world? तमे जदि गोटे फ्लावर स्कूल रो जने स्टूडेंट हेथांतो बा गोटे फ्लावर हेथांतो you should be giving beauty and happiness. You should be giving the message of beauty and happiness to the rest of the world. Flowers were hiding underground before they bloom. They teach us the value of dash. तो फ्लावर माने ब्लूम हवा पूर्वरु फुटिबा पूर्वरु से माने अंडरग्राउंड हेकी थांती. एटा को मेसेज दोउची? एटा दोउची पेशेंस रो मेसेज. पेशेंस धैर्य. Okay, Bihu, a joyous dance of Assam, is marked with brisk steps and hand movement. Brisk steps and hand movement. हाथर movement और steps speed steps नहीं कि बिहू रो नाचो करी थांती. बिहू dance. Okay. People of Assam are blessed with the mighty river dash. Assam रे को river अच्छे ब्रह्मपुत्र. People of Assam are blessed with mighty river Brahmaputra. Next, the 100 Drum Festival is celebrated by Garos in village of Dash. 100 Drum Festival कोटी पालन हुए जोड़ा को हमें वंगाला फेस्टिवल मध्य कही था. This is the festival celebrated in Meghalaya. The phrases bridal song and cradle song suggest that life is full of pleasure, life is full of pain and suffering, filled with opportunities, filled with customs and beliefs. Life is full of pleasure. Pleasure को दर्शावा पे माँ जियो को कहउजंदी bridal song and cradle song कथा. Next, a mother sings lullabies to make her baby go to sleep. Here the word lullabies refer to dash. Lullaby रो अर्थ होची cradle song. छोटो पिला को सोएबा पे जो गीत गांती. Kind sir, have pity. Turn your attention to the poor hungry man. The statement is said by ए statement के कहितला? ये beggar कहितला. Beggar कहला kind sir, have pity. Turn your attention to poor hungry man. Sergi, the advocate, offered some other cleaner employment to the beggar. जेतबेले Sergi move कले घर चेंज कले सेतबेले ताकू cleaner employment देइथिले. से cleaner employment कौन थिला? The work of a copy करिवा work. Olga the cook proved that the drunkard like Luskov can be changed by dash. Luskov को केमिति चेंज करथिले? से noble deeds and words. भलो काम एवं कथा कही कि लुस्कॉफ बड़ी ड्रंकार्ड को मध्य से चेंज करि परथिले. तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट वन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेजर कॉज ऑफ एयर पोल्यूशन? एयर पोल्यूशन रो कॉज कोटा नुहे. ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट, यस. एमिशन ऑफ इंडस्ट्रियल स्मोक, यस. बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, यस. एसिड रेन इज नॉट अ कॉज ऑफ पोल्यूशन. एसिड रेन इज अ इफेक्ट ऑफ पोल्यूशन. से पचारछि कॉज कारण. एसिड रेन कारण नुहे. एसिड रेन होची परिणाम तार इफेक्ट हैला. नेक्स्ट वन, व्हाई इज भोपाल इंसिडेंट कॉल्ड ट्रेजिक इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट? इट जो तुम पढ़िबो बिकॉज इट एमिटेड ऑब्नॉक्सियस गैसेस एसेस. ठीक है. ए डेडली गैस एस्केप्ड इनटू द एटमॉस्फेयर एंड किल्ड 400 रेसिडेंट्स. बिकॉज भोपाल इज एन इंडस्ट्रियल सिटी. बिकॉज ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल वेर नीडेड रेंडर्ड ब्लाइंड एंड क्रिपल्ड. सब आंसर ठीक ठीक लागिबो ए टाइप रो क्वेश्चन रे. किंतु से कहिचे ट्रेजिक इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट काहे कुआहला? कहीं ना गैस गोटे एस्केप है कि 4000 लोक को मारी देला. एटा होचे मेन पॉइंट. तो बेले बेले तुम मन को चारटा ऑप्शन जदी ठीक लागुची तो तुम चूज करिवो कोटा मोस्ट एप्रोप्रिएट हेथिवो. काहे कि ट्रेजिक कहबा अंध हेजबा लागि गोटे ट्रेजिक इंसिडेंट का, बट ताठो अधिक ट्रेजिक होची 4000 लोक मरि जिवा. तो दैट विल बी द करेक्ट आंसर. तो यू मस्ट चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर टू द क्वेश्चन. ओके, नेक्स्ट वन, question number 23. What is the message conveyed by the poet through the poem From the Formalin Jar? From the Formalin Jar poem द्वारा poet कौन message दौचंती? Poet message दौचंती जे age, fame, beauty or wisdom becomes meaningless unless a person is careful about his safety. यदि safety को ध्यान न दबो तुमरो age, fame, beauty, wisdom किछि भी value नहीं. Next, what is insulting to Vicky's brain? Vicky's brain पे insulting कोटा थिला. Being called as a specimen. जेतबेले ताकू गोटे specimen बोली कुआ होतला, लोक माने आसी कि ताकू देखुतले, stare करतले, that was insulting for him. For it, what should we avoid in our leisure hours? हमरो leisure hour रे कोन avoid करबा?
रीडिंग इंटरेस्टिंग बुक नहीं एटा को करवा एवॉइड करवानी स्पेंडिंग टाइम विथ गुड कंपेनियन करवा मेकिंग इंटरेस्टिंग हॉबीज करवा मेयर आइडलिंग को एवॉइड करवा केवल टाइम पास करवा खाली रे बसिबा ताको एवॉइड करवा ठीक अच्छे व्हिच डाइट प्रूव टू रिच फॉर तिमोथी मिल्क जेतबेले छोट थिला ताको मिल्क दिया होतला किछि दिन परे मिल्क प्रूव्ड टू रिच फॉर तिमोथी अकॉर्डिंग टू लॉर्ड यूस्टिस पर्सी सक्सेस इन लाइफ डिपेंड्स लार्जली ऑन डैश सक्सेस इन लाइफ लार्जली डिपेंड्स ऑन गुड हेल्थ अकॉर्डिंग टू द ऑथर लॉर्ड यूस्टिस पर्सी मनी डज नॉट grow on trees here who said this statement ए स्टेटमेंट कहितला जुमन शेख मनी डज नॉट ग्रो ऑन ट्रीज गछरे पैसा लागिनी बेले तार ओल्ड आंट को कहितला The wise man went to the king and said, "It is a grain of corn." When dash, when a hen pecked at the thing and made a hole in it. किए भी जानी पार नथले किंतु जेतबेले गोटे hen गोटे कुकुड़ा आसी के से ग्रेन रे होल कर देला तापर से जानी थिला आ जाई के कहिला राजा को जे एटा it is a grain of corn. What practical solution can people take to reduce air pollution in their daily life? तो को प्रैक्टिकल सॉल्यूशन करि परिबे डिपेंडिंग मोर ऑन प्राइवेट व्हीकल भूल प्राइवेट व्हीकल नहीं पब्लिक को प्रिफर करा जाए बर्निंग मोर सल्फर कोल भूल यूजिंग व्हीकल इक्विप्ड विथ हार्मलेस डिवाइस एटा ठीक हबो एंगेजिंग इन डिफॉरेस्टेशन मेकिंग अर्बनाइजेशन एटा सब रॉन्ग ए सब कले हमरो पोल्यूशन अधिका हबो एयर पोल्यूशन रोकिबा पय हमें एमिति व्हीकल्स यूज करबा जुथरे के हार्मफुल डिवाइस लाइक कैटालिटिक कन्वर्टर लागि थिबो डॉक्टर एपीजे कलाम डैश a lot of books it grammar start हेगला पिलाने देखो एपीजे अब्दुल कलाम इज अ पर्सन हु इज ऑलरेडी डेड जो डेड पर्सन हेले पास्ट सिंपल लगेबो जदि ऑथर बंची थिबे ताले प्रेजेंट परफेक्ट लगेबो हैज रिटन एपीजे अब्दुल कलाम इज ऑलरेडी डेड दैट्स व्हाई वी यूज पास्ट सिंपल रोट द गर्ल डैश मोर एंड मोर ब्यूटीफुल डे बाय डे द गर्ल इज लुकिंग मोर एंड मोर ब्यूटीफुल डे बाय डे प्रेजेंट प्रोग्रेसिव डे बाय डे गोटे काम माने चली कंटिन्यूअसली प्रोसेस रे अच्छे तो कंटिन्यूअस लागिबो इज लुकिंग ठीक अच्छे नेक्स्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंपरेटिव सेंटेंस एक्सप्रेस सजेशन कोटा सजेशन कहूची रेस्पेक्ट योर एल्डर एटा दला एडवाइस एटा होचे एडवाइस प्लीज हैव अनदर कप ऑफ टी एटा होचे रिक्वेस्ट प्लीज को होचे ओके शट द विंडो एटा हला ऑर्डर एटा होचे ऑर्डर किंतु लेट्स गो ऑन एक्सर्शन एटा होचे सजेशन चलो ओटे एक्सर्शन को जीवा एटा होचे सजेशन ओके तो ऑप्शन सी इज वो करेक्ट आंसर द बॉय डिड नॉट गो टू स्कूल डैश ही वाज इल द बॉय डिड नॉट गो टू स्कूल फॉर ही वाज इल जेहेतु से इल थिला द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वाचिंग द क्रिकेट मैच डैश 50 द नंबर ऑफ थिले सिंगुलर वर्ब यूज हबो तो इज हबो करेक्ट आंसर द नंबर ऑफ स्टूडेंट वाचिंग द क्रिकेट मैच इज 50 what the students are studying these days dash very important for their examination what the students are studying these days is very important for their examination is haba तुम कहबो काहे कि is काहे हबो रे is हबो because एठी सेंटेंस रो सब्जेक्ट ता गोटे सॉरी कोडे मारचे हां what the students are studying these days ए पूराटा होचे गोटे क्लॉज जेतेबेले गोटे क्लॉज गोटे सेंटेंस रो सब्जेक्ट आकार रही थाए ताले वर्ब सब बेले सिंगुलर हेता है दैट्स व्हाई ए हबो करेक्ट आंसर नेक्स्ट आई स्टिल रिमेंबर डैश पुरी विथ माय फादर आई स्टिल रिमेंबर विजिटिंग पुरी विथ माय फादर द कैंडिडेट्स शुड रीच द एग्जामिनेशन हॉल इन टाइम माने समय पूर्वरु ठीक अछि किछि समय पूर्वरु हैव द फैक्ट्री वर्कर्स डैश द स्ट्राइक कॉल्ड ऑफ स्ट्राइक को कॉल ऑफ कराला कॉल ऑफ माने कोन टू कैंसल ओके टू कैंसल तो कॉल ऑफ रो पास्ट टेंस है कॉल्ड ऑफ हैव द फैक्ट्री वर्कर कॉल्ड द स्ट्राइक ऑफ नेक्स्ट पिक द करेक्ट ग्रामेटिकल सेंटेंस हैविंग ए डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज जो कोटा जोटा कि जहाँ बिना तमे सेंटेंस रो माने नाउन को आइडेंटिफाई करि परिबनी तो डिफाइनिंग माने it is a necessary part essential part of the sentence तो कौन हबो ए डॉक्टर इज ए पर्सन हु ट्रीट्स द पेशेंट एटा हबो करेक्ट आंसर ये गोटे एसेंशियल पार्ट एटा नथिले हमरो डॉक्टर इज ए पर्सन कहले को पर्सन जणा पडुनी राइट सो इट इज अ
defining relative clause. Option C is the correct answer. Next one. Pick out the sentence with a conditional clause. Conditional clause थिबाटा बाहर करो. They studied hard. They were although they were tired. Do it as your teacher showed you. Were I a bird, I would fly in the sky. एटा हबो correct one. एटा होची imaginary condition. Second conditional एटा. Imaginary condition. Were I a bird, जदि मो bird ही थांती, I would fly in the sky. एटी if टा omit करा हेची. My dog is being taken to the garden. The sentence is present progressive. ताको passive करी कुआ हेची. Is अच्छी और being अच्छी ना, तो is being माने present progressive. Next, pick out the correct grammatical sentence. He wanted to know if it is raining. He wanted to know if it was raining. He asked whether was it raining. He asked whether it is raining. He wanted to know if it was raining. से जानिबा को चाहूतला वर्षा होची कि नाही. My friend visits me every year dash the new year. At the new year. Festival पूर्वरु at रो व्यवहार ही था. Preposition. There are many people dash lives have been spoiled by their war. Whose life? जाहु मानकर जीवन नष्ट हो गलानी war रे. तो whose हबो correct answer. My shirt needs ironing. The passive sentence of the sentence above is my shirt needs ironing. आको passive कले कौन हबो रे? आको passive कले हबो my shirt needs to be ironed. My shirt needs to be ironed. He said to me, did you know him? He said to me, did you know him? It can be changed into reported speech as he told me if I know him. He asked me if I know him. He asked me if I had known him. It have a correct answer. Did you know? Past simple. माने past perfect है जो. He asked me if I had known him. Next one. But through I was none the worse for having neglected exercise, I am still paying the penalty of another neglect. The underlined word can be replaced by dash. None the worse माने कौन? None the worse माने not affected. एते effect है नहीं. The manager could not manage his work. तो ये जो manage रो opposite कले कौन होबो? को prefix लागिबो. Manage होची mismanage. Okay? The manager could mismanaged his work. Okay? Next. Gandhi was bad dash handwriting. Gandhi was bad in handwriting. In handwriting. Okay? Option C is the correct answer. तो ये थिला तो मान करो सेट 2 जो परीक्षा दर्पण 2025 अच्छे तार दुईटा सेट आम ऑलरेडी डिस्कशन करिले. नेक्स्ट आम जीवा तृतीय सेट को. ठीक है. तो लेट मी हैव सम वाटर फर्स्ट. गिव मी 1 मिनट. ओके चलो. तो तुमर टाइम जमती बंचब एग्जाम बहुत पाखे अच्छे से मु गोटे गोटे न करी तुम सब जाक गोटे वीडियो रे करे दूचे. राइट. तो तुमको भी एबे समय बंचार अच्छे. कम समय रे अधिक प्रोडक्टिविटी रहिबार अच्छे. अधिक पाठ कम टाइम रे कवर करियार अच्छे. राइट. सो दैट्स व्हाई दिस विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू. सो गोटे गोटे लाइक करो जो मैंने एबे जाई करनो देखुच क्लास लाइक करो. Okay, next one is 181. Model question paper 3. Okay, let's go. चलो नेक्स्ट वन कौन कही फर्स्ट क्वेश्चन जल्दी जल्दी करवा बहुत स्पीड रे टाइम नहीं हम पाके. फर्स्ट grandfather had the distinction of being the only member of the party to have bagged any game dead or alive. Option A is the correct answer. Option A is the correct answer. Next, grandfather made straight for the particular case in which Timothy had been locked up. Timothy had been locked up. Next, what tempted Gandhi to sit in the Persian class? The easiness of Persian language. संस्कृत डिफिकल्ट थिला मेमोराइज करिया पड़थला. पर्शियन इजी थिला. दैट्स व्हाई ही सेट इन द पर्शियन क्लास. एज ए स्टूडेंट गांधी वाज डैश इन मैथमेटिक्स.
Gandhi was fair in mathematics. Fair. Okay, बहिरे देइछि जो वर्ड सेटा ही लिखिबो. Lencho looked at the northeast sky and foretold about the ensuing rainfall. Foretold रो अर्थ कोन? Predicted. Predict करिवा. Apart from the crest of a low hill, Lencho's house stood in the middle of the valley. In the middle of the valley. Valley रो middle रे थिला. ठीक अछि. Next one. The setting of the poem The Solitary Reaper is dash. Solitary Reaper quote ro katha, the mountain region of Scotland. Scotland ro mountain region. What makes William Wordsworth motionless and still? Motionless and still कोडा कर देथिला तांको. His emotional feeling for the melodious voice of the girl. Girl रो melodious voice रे से मुग्ध हो जाइथिले. Next. Poet considers the summer sun pleasant. काहे ना she belongs to Ireland, which is a cold country. Dorabji Idulji Gimi was a lenient, popular, good and disciplinarian teacher. Find odd one out. तो गांधी जी का जो हेडमास्टर थिले दोराबजी इदुलजी गिमी, he was popular, good and disciplinarian. Lenient न थिले. Lenient थिले Persian teacher. Okay. Next. In the poem Village Song, the child desires more than the comfort of home. It is तो कौन से डिजायर करथुला? A peaceful life in the nature. The flowers mentioned in the poem Village Song are dash. Village Song रे lotus और lily flower कथा कुआहेछि. The river isles is haunted by days. Coil haunted river isles. Coil, कोइली. Okay. Next. Which state is separated from Northeast India by Siliguri corridor? Siliguri corridor रे separate का करछि? सिक्किम को अलगा करिछि. निंगल चकोबा is the festival of Manipur that binds and revives the relationship between married girls and their parents. Northeast India is a collective name for the easternmost parts of India. पूरा पूर्व रे जोटा अछि. The flowers in the poem Flower School are compared to the dash. The flower school रे flowers को compare कराइछि school children सहित. The storm clouds rumble in the sky. Here rumble माने कौन? To make long deep sound. Long deep sound होगा. Correct answer. Okay. The beggar agreed to chop wood because dash. काहे किसे agree कला? Because he had been trapped by his own words. निजो word रे फंसी जाइथिला. Sergei the advocate suddenly remembered about the beggar when his eyes fell on the men's overshoes. Overshoes रे जेतबेले तांकर आखि पडिथिला सेतबेले गोटे उच्च गोटे नीच थिला, हाई लो थिला, सेठु जानि पारथिले. Day by day the amount of harmful gases are increasing in our atmosphere. It would eventually lead to dash. तो global warming को धीरे धीरे होची. Which of the following disease in the box are caused by air pollution? Air pollution लगी कौन कौन हुए? Eye irritation हुए, sketchy throat हुए, respiratory illness हुए, malaria हुए नहीं. तो 1 to 4 option B is the correct answer. Brain, I am Vicky's brain. Ammu कहूची where are you? से कोठी अछि? In the formalin jar. Vicky rode his bike without wearing his helmet to his friend for dash, for a ordinary work. गोटे साधारण छोटो काम पे जाइथिला. Which one of the Vicky's characteristics is not displayed in the poem from the formalin jar? को characteristic देखे नहीं. Vicky was very strong, stout. Vicky believed in taking pain. Vicky was good at math and computer. Vicky was careful. एटा नुहे. Vicky careful नथिला सेति हेलमेट पिंधलानी आउ तार ब्रेन पड़ेला formalin jar को. Lord Eustace Percy advised students not to dash, not to choose a trade or profession carefully, work hard and continue learning, hesitate to ask advice from teachers, maintain an untarnished character. C is the correct answer. कौन करनी बोली कहला तो टीचर मान को एडवाइस मागिवा पे हेजिटेट करनी, कुंठाबोध करनी. What is the priceless possession of an individual? Character is the priceless possession बोली कहिसंती Lord Eustace Percy. During which trip did the bullock made last effort but fell down on the ground? During the fourth trip. Who has all the following characters in the story Villagers? She had a small piece of property. She threatened to call panchayat.
she was neglected at old age, she had deep faith in God. को कैरेक्टरिस्टिक एठी एथिरु को कैरेक्टरिस्टिक जाको को कैरेक्टर रो थिला जो ओल्ड आंट थिला ओल्ड आंट रो ए सब कैरेक्टरिस्टिक्स थिला ठीक अछि नेक्स्ट वन लेबर वाज द ओनली थिंग मैन कॉल्ड देयर ओन हु सेड द स्टेटमेंट जो ओल्ड मैन रो ग्रैंडफादर थिला थर्ड बुढ़ा जी आस्थिला से कहला लेबर वाज द ओनली थिंग मैन कॉल्ड देयर ओन पिक आउट द करेक्ट ग्रामेटिकल सेंटेंस मुन्ना डज नॉट नीदर एट फिश नॉर मीट भूल जीव मुन्ना नीदर डज नॉट ईट भूलला मुन्ना नीदर ईट्स फिश नॉर मीट भूलला ऑप्शन डी मुन्ना ईट्स नाइदर फिश नॉर मीट ये हबो करेक्ट यूज ऑफ नाइदर नॉर 32 इडली एंड चटनी डैश माय फेवरेट ब्रेकफास्ट इडली एंड चटनी इज माय फेवरेट ब्रेकफास्ट दीटा नाउन जॉइन हेथिबो एंड रे आ गोटे नोशन गोटे धारणा देउथबो जेमति ब्रेड एंड बटर से वाला इडली चटनी माय फैमिली डैश डिवाइडेड ऑन द प्रॉपर्टी इशू जदि गोटे कलेक्टिव नाउन थिबो ताले ताको देखिया पड़िबो सेंटेंस रे जदि ताको सिंगल यूनिट धरा होची ताले सिंगुलर प्लुरल जदि सब मेंबर को धरा होची ताले प्लुरल तो ये डिवाइडेड ऑन द इश्यू कही डिवाइडेड माने प्रत्येक व्यक्ति को निया होची तेणु करके हैव डिवाइडेड हबो प्लुरल नाउन हबो माय फैमिली आर डिवाइडेड सॉरी माय फैमिली आर डिवाइडेड ओके प्लुरल नाउन माय ग्रैंडमदर इज डैश द डॉक्टर्स क्लिनिक माय ग्रैंडमदर इज एट द डॉक्टर्स क्लिनिक एग्जैक्ट जगह थिले एट लागिवो दिस आंसर वाज रिटन in pencil in pen in pencil हबो my family visited me last week underline word को का द्वारा रिप्लेस करी हबो called on visit रो हमरो जो फ्रेजल वर्ब अछि colon रो अर्थ होछि visit ओके नेक्स्ट सुहानी asked her mother dash सुहानी asked her mother why unhappy he was भूल why was she unhappy why she was unhappy why unhappy was she तो वाज सी वाला तो हबार नहीं वाई सी वाज अनहैप्पी हबो करेक्ट आंसर ठीक अछि इनडायरेक्ट स्पीच रे कहला बेलको तमे आंसर फॉर्मेट रे कहबो माने सब्जेक्ट परे वर्ब रहबो नेक्स्ट वन माय ग्रैंडफादर सेट डैश अ न्यू स्कूल फॉर चिल्ड्रन सेट अप माने होचे टू बिल्ड समथिंग न्यू टू स्टार्ट समथिंग टेल मी इफ स्मृति वुड गो देयर अंडरलाइन क्लॉज इज डैश tell me something it is a noun clause okay acting as the object of the verb next one question number 40 I have already read the story book you gave me I have already read the story book you gave me the underlined subordinate clause is dash ये कौन कहूची the book you gave me it is a clause it is a relative clause ये होचे गोटे relative clause which you gave me which टा omit ही जाइची relative pronoun omit ही जाइची book विषय रे extra information दोची the boy danced dash he were a film hero the boy danced as if he were a film hero गोटे film hero भलिया नाचिला okay next how did you work out the sum it can be changed into passive कले how the sum was worked out how the sum was worked out ये हबा आंसर how was the sum worked out क्वेश्चन होची ना तो was टा हमरो सब्जेक्ट रो पूर्व रो आसीबो ऑक्सिलरी वर्ब how was the sum worked out the student labored hard dash they were tired the students labored hard although they were tired adverb clause of concession he said good evening it can be changed into indirect speech as he said good evening he wished me a good evening option D is the correct answer pick out the correct grammatical sentence there was no news nevertheless she went out there was no news nevertheless she went out comma ut extra ache there was no news nevertheless she went out diade comma ache there was no news nevertheless she went out एठी सेमीकोलन ache तो तमे जे देखिबो एठी देयर वाज नो न्यूज़ नेवरदलेस शी वेंट आउट सेमीकोलन वाला ये हिजबो ठीक आंसर न्यूज़ किछि नथिला तथापि से गला कैरेक्टर इज ए प्राइसलेस पोजीशन कीप इट
therefore untarnished. Underlined word को substitute केमिति करि हबो untarnished. Untarnished रो अर्थ कोन दाग विहीन without any black spot. She said when I left home it began to rain. Reported speech कले कोन हबो she said that when she left out it began to rain. दीटा एक्शन अछि माने टेंस चेंज हबनी. Next, the house dash 2 bedrooms, a kitchen and a living room. The house comprises, okay, a violent tropical storm with very strong wind. Tropical very strong wind, typhoon. There is almost no sugar at home. Almost no sugar को आमे कहि परिबा hardly. There is hardly any sugar at home. ठीक अछि. ये थिला तो मानकर थर्ड सेट रो 50 जाक एमसीक्यू क्वेश्चन. आगु को बढ़िबा हमें नेक्स्ट जिबा सेट 4 को. सेट 4 अछि पेज नंबर 266 रे. ओके आई होप देखा जाउथो एटा टिके ब्लरी अच्छे टिके क्वालिटी खराब अच्छे. सेट 4 टा सेट 4 सब सब्जेक्ट टी क्वालिटी खराब अच्छे जो पीडीएफ देछि गवर्नमेंट सेतिरे हो देखा जाउछि राइट. यस चलिबो. चलो द जू अथॉरिटीज रिसीव्ड तिमोथी ग्लैडली बिकॉज इट वाज डैश. इट वाज वेल फेड एंड फेयरली civilized. Well fed and fairly civilized. As per the second keeper of Lucknow Zoo, Timothy died dash. Timothy died 2 months ago. 2 months ago. 2 मास पूर्वरु. Okay. Next. One's inner sense of right and wrong helps one to give justice to other. Inner sense of right and wrong ताको कहा जाए conscience. Okay. Next. The postman went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God. Postman हसी हसी के postmaster पाखु गला और letter to God देखेला. Giorgio Lopez Fuentes was awarded dash in 1935. 1935 रे ताको award करा हितला National Prize of Arts and Science. In poem The Solitary Reaper, the line plaintive numbers flow refer to dash. Plaintive number रो अर्थ होचे old unhappy far off things. Okay. Next. What does the poet mean to say in the line as if her song could have no ending? तार song रो कोनोसी ending नथिला. तार अर्थ कोन? तार अर्थ होचे the song contains an everlasting effect. तार effect टा everlasting थिला सब बेले रहितुला. Gandhi requested Mr. Gimme to exempt him from gymnastics so that he might be dashed to serve his father. He might be free to serve his father. The underlined word in the line he made their glowing color refers to dash. ये जो देर कुआ होची कहारो glowing color कथा कुआ होची. Glowing colors of little flowers. Lencho was an ox of a man. What does the line mean? Ox of a man माने very hard working. Okay. Very hard working. Next one. During the 10-day long Hornbill Festival and sporting events, men clad in warrior costume show off their hunting skills. Losar, the Tibetan New Year, is marked with Losar festival रे कौन हुए prayer हुए, offering हुए, devotional music, joy, merriment and extensive meal वाला एटा हबो joy, merriment and extensive meal हुए. Okay. The festival Sagadava reminds of people of dash. Sagadava festival रे कौन हुए ये गोटे बुद्धिस्ट फेस्टिवल जो थरे कि जोटा सेलिब्रेट करे the birth, enlightenment and death of Lord Buddha. Okay, option D is the correct answer. If you were Sergei, how would you describe the beggar Luskov when you first met him? तुम जो फर्स्ट टाइम बेगर को मिसिबो एज सेर्गी सेते बेले ताको कोन कहबो ताको कहि था तो ए रैग्ड मैन विथ ड्रंकेन आईज
A rat man with drunken eyes. Option A. Next one. 15. The beggar confessed lying when beggar जेतबेले केतेबेले कन्फेस कला जे से ठीक से भूल कहूची मिछ कहूची बोली जेतबेले सेगी पुलिस डाकिवा पई कहले सेगी क्राइड एंग्रीली एंड थ्रेटेन टू सेंड फॉर पुलिस डाकिवा कहलारो ठीक कथा कहला द मदर हैज फेड द चाइल्ड ऑन गोल्डन ग्रेन रो अर्थ कोन गोल्डन ग्रेन रो अर्थ होची डेलिकेट डिशेस सुस्वादु खाद्य डैश ऑफ द फॉलोइंग टेल अबाउट वर्ल्डली हैप्पीनेस कोटा दी सैंडल सेंटेड लीजर को बा चंदनर बास्ना भलिया जो खाली समय मिले सेटा वर्ल्डली हैप्पीनेस को बुझाए इन पोएम द फ्लावर स्कूल ब्रांचेस डैश टुगेदर इन द फॉरेस्ट एंड लीव्स डैश ब्रांचेस रशल ब्रांचेस कौन करती branches clash leaves rustle branches crash and leaves rustle. Okay, next question number 19. During their holidays the flower children rush out in dresses of co color dress pindanti dresses of pink, yellow and white. The flower children are in a hurry to go to their home in koti in the sky. Okay, global warming is an impact of greenhouse gases. Which of the following is not a greenhouse gas? Methane greenhouse gas, carbon dioxide, nitrous oxide, both tinta jako greenhouse gas. Kintu oxygen is not a greenhouse gas. Which of the following phrases in from the formalin jar says that it is necessary to work hard in order to gain success in life? लाइफ रे सक्सेस पाइबा पे हार्ड वर्क करिवार अछि को लाइन कहिछि नो पेन नो गेन. ओके, दैट वाज द मोटो ऑफ विकी. ड्राइव सेफ लेट योर प्रीशियस लाइफ नॉट बी इन वेन. ड्राइव सेफ लेट योर प्रीशियस लाइफ नॉट बी इन वेन. एठी योर काहू कहिछि योर कहिछि रीडर रो. ओके, रीडर को कहिसंती पोएट एठी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24. Raising the heights of the chimney is a dash measure to control air pollution. It is a dispersal measure. Okay, dash is the deadly enemy of health and efficiency. According to Lord Eustace Percy, drinking is the deadly enemy of health and efficiency. According to Lord Eustace Percy, why is it necessary to continue your education even after leaving school? To succeed in your trade and profession. ट्रेड किंबा प्रोफेशन रे सक्सीड हवा पई तुमको लर्निंग करिया को पड़िबो. बाइंग और सेलिंग ब्रेड इज एन सिन. हु सेड दिस? ओल्ड मैन रो ग्रैंडफादर कहला आम टाइम रे बाइंग और सेलिंग वाज अ सिन. डैश वाज द ओनली थिंग मैन कॉल्ड देयर ओन. लेबर वाज द ओनली थिंग मैन कॉल्ड देयर ओन according to the grandfather. Which of the following was true before the first panchayat was held? First panchayat haba aguru kon heitila? Samju Sahu bought bullocks from Algo. 9. Algo had bought a beautiful pair of bullocks from the fair at Batesar. Eta purbaru heitila. If you were Vicky, which of the following traffic symbol would you follow to avoid such road accident that happened in the poem From the Formalin Jar? फ्रॉम द फॉर्मलिन जार रे जो एक्सीडेंट होता ताको अवॉइड करिया पे को साइन को मानि थांतो ए साइन डी वियर हेलमेट पिंधो बोली साइन ता ताको मानि थिले एक्सीडेंट हो हेइथिले भी हमें बंची जाई थांतो. साला एक्सटिंग्विश द फायर फ्लेम्स. एक्सटिंग्विश पई को फ्रेजल वर्ब यूज होबो. एक्सटिंग्विश माने पुट आउट मींस टू एक्सटिंग्विश लिभेवा. Mr. Sudhakar Sahu set off dash Russia. Set off for Russia. This is the first time I dash a car. This is the first time I have driven a car. Look dash. Look, an accident is going to happen. The youth dash more serious than the old. The youth are more serious than the old man. Are कहीं होबो कहीं ना जदि गोटे एडजेक्टिव को गोटे क्लास को बुझिया पे यूज करा जाए सेतबेले येटा
भर्बटा प्लूराल होता है ठीक अच्छे डू यू माइंड डैश द विंडो डू यू माइंड ओपनिंग द विंडो डू यू माइंड ओपनिंग द विंडो वेदर यू जॉइन द पिकनिक और नॉट यू हैव टू पे द मनी तुम जॉइन कर कि न कर तुमको दबा पड़ो यहाँ हूँ एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंसेशन ठीक अच्छे नेक्स्ट I got my mobile dash I got my mobile broken I got my mobile broken passive raje my mother said I took it home with me it can be changed into indirect speech kale kon hobo I took it home with me my mother said that she had taken it home with her past simple ko past perfect hobo she had taken it home the student pursued the teacher dash with them the student pursued the teacher to go with them infinitive 2 plus infinitive father said to me don't waste your time father advised me not to waste my time not to waste my time अरे एटा जदि इंपेरेटिव सेंटेंस थिबो जदि अफर्मेटिव थिबो 2 plus infinitive नेगेटिव थिबो not 2 plus infinitive okay 2/3 of the cold drink dash been used if the subject starts with a fraction verb agrees with the noun singular पे singular plural पे plural तो cold drink होचे गोटे uncountable noun तेम करी singular हबो तो 2/3 of the cold drink has been used हबो correct answer next one 43 air pollution has dash effect on building complete the sentence with an appropriate participle air pollution has damaging effect on the building Jharana has put on a beautiful dress it can be changed into an exclamatory sentence exclamatory करले a अच्छी ना तो what a beautiful dress Jharana has put on what a beautiful dress Jharana has put on option C है वो correct answer Mr. Gimi was a person who makes other obey his order अन्य मान को order निजर मनांती ता पे word कौन disciplinarian on this occasion people clean their homes and discard the old to bring in the new year pick out the non-finite clause to bring non-finite okay to bring तो answer होगा to bring in the new year option D next one I made a dash with the bank manager I made a correspondence with the new manager noun आकार व्यवहार होगा correspondence रो अच्छा correspondence रो spelling पचारि correspondence रो correct spelling हवा D CORRESPONDENCE correspondence okay rice dash all over Odisha rice is grown all over the Odisha waste not want not को type रो sentence एटा इज होचे compound sentence don't waste don't want है ना in which of the following sentence the relative pronoun can be dropped relative pronoun को drop करी हबो Mr. Palai who teaches us English Mr. Palai teaches कल तो हबन ना it is the best possible explanation that gives about Socrates explanation gives about Socrates भूले जीवो कैलाश whom everybody likes एठी भी लगे पड़िबो I have already read the story book which my English teacher gave me एठी तमे which टा काटी देले भी sentence रो meaning आसीबो I have already read the story book my English teacher gave me तेणुक ऑप्शन डी हो करेक्ट जो आम रिलेटिव प्रोनाउन को ड्रॉप करी परिबा ठीक अच्छे चार्टा सेट ऑलरेडी सरला नाउ वी विल स्टार्ट द फिफ्थ सेट लास्ट सेट परीक्षा दर्पण इंग्लिश रो ओके लास्ट सेट अच्छी पेज नंबर 336 ऑल राइट लेट्स स्टार्ट द fifth set give me 1 second okay let's go let's start the last set model question paper 5 first question what do we gather every day as described in the poem all things bright and beautiful What do we gather every day? The rushes by the water we gather every day. B. How does the sky look at sunset? At sunset, the sky looks bright. What belief makes Lencho say his family not to be so upset?
किसी अपसेट हुआ न because no one dies of hunger. Next one, why is the solitary reaper song not comprehensible to poet? Because her song is in her own dialect. तांकर निजर डायलेक्ट रे निजर लैंग्वेज रे थिला जोटा पई से बुझी पारु नथिले. गांधी मैट्रिकुलेटेड फ्रॉम हिज स्कूल इन द ईयर डैश. को वर्ष से मैट्रिकुलेशन तांकर पास करथिले? गांधी मैट्रिकुलेशन पास करथिले इन द ईयर 1887. 1887. Okay. Next one. The name of the book of Gandhi's autobiography is My Experiment with Truth. Gandhi ko autobiography ro na hoche My Experiment with Truth. What remark was not passed by second keeper in Lucknow Zoo? Second keeper कोटा कहि नथिला. I remember your tiger कहिथिला. He died 2 months ago कहिथिला. It is not your tiger कहिथिला. I know your tiger कहि नथिला. तो ऑप्शन डी इज व करेक्ट आंसर. ठीक अच्छे. Timothy would make himself comfortable. कोठी comfortable करथला? On long sofa. The corporal punishment made Gandhi weep piteously when he was in first or second standard. D. 10 number. The postmaster came to know that to answer Lensu's letter he needed something more than goodwill, ink and paper. A. Next. The poem Village Song appeared in Sarojini Naidu's book titled The Golden Threshold. Golden Threshold book re thila. The poem Village Song has possessed all the qualities of a traditional folk poetry. The expression honey child in Village Song shows that the mother is addressing the girl affectionately. Mother तांको झियो को माँ झियो को गेल्ला रे आदर रे डाकुचंते affectionately. Okay. Next one. Mother, I really think the flowers go to school underground. Who does I refer to? I एठी poet निजे कहउछंते. The flower children rush out in the colorful dresses when dash. When the rain comes. जेतबेले rain आसे वर्षा आसे सेतबेले से माने different color करिकि different color रो dress पिंदी की बाहरंते. The Gallo tribe worship the goddess dash. Gallo tribe Mokpin goddess को praise करंते बा पूजा करंते. Arunachal Pradesh is one of the most remote and picturesque location. Here, picturesque माने कौन? Picturesque means charming to look at. देखिवा को सुंदर. The main feature of festival Tripura is that Tripura festival रो main feature कौन? That all the people join the celebration. Sergei met Luskov after 2 years at the ticket window of a theater. Theater रो ticket window रे. Next, vodka is a dash. Vodka is a kind of strong alcoholic drink. Many people, physicians, engineers, meteorologists, botanists are involved in research. Meteorologist माने कौन? Meteorologists are the person who study about weather condition. Persons who study about weather condition. पाणीपाग विषय जे पढ़ंती तांको meteorologist कहा जाए. Which statement reflects that Vicky was good at studies? Vicky good थिला स्टडीज रे को स्टेटमेंट कहूचे कंप्यूटर एंड मैथ्स वेर हिज डोमेन सेथरु जणा पड़ुची जे भलो पाठ पढुतला. Which statement is not true? The automobile exhaust are more dangerous than the industrial smoke. एटा ही भूल गला. Polluted air leads to respiratory disorder. एटा ठीक. Flowers and vegetable crops suffer. ठीक. Chlorofluorocarbon are used in refrigerant. ठीक. ऑटोमोबाइल एक्सॉस्ट टा बेसी डेंजरस इंडस्ट्रियल एक्सॉस्ट थारो एटा भूल. इंडस्ट्रियल थारो अधिक ऑटोमोबाइल डेंजरस. According to Lord Eustace Percy, list the things that prevent someone from achieving success in life. Good health, clean habits and idling. Idling नहीं भूले गला. Smoking, idling भूले गला. Regular habits and that prevent someone from achieving success. अच्छा जे सक्सेस पाइबा को प्रिवेंट करे. गुड हेल्थ और क्लीन हैबिट हबनी. स्मोकिंग, आइडलिंग एंड गैम्बलिंग एटा हबो आंसर. स्मोकिंग, आइडलिंग, गैम्बलिंग prevent someone from achieving success. Success पाइबा को रोकी दिए. ओके
Next, suppose you are Lorraine after Vicky's dreadful road accident. What advice would you like to suggest the society to avoid injuries? को advice दवा. Don't consume alcohol. Don't use cell phone. Don't put helmet कहबने. Put helmet. Don't drive with high speed. So 1, 2 and 4. B हवा correct answer. Samju Sahu ought to pay the full price of the bullock. Wow, how much was the full price? Full price was 150 rupees. The bullock became a mere bag of skin and bones. Which statement does not support the above statement? The bullock was on proper fodder and water. एटा भूल. Mere bag of skin and bone ही जाइतला. ताको ठीक रे खाइबा मिल नथला. ठीक रे खाइबा दिया होतला बोली कहिचे. सेटा भूल हे जबो. Here are some clues given in the box. Old, bent, pale and toothless. Find out whose personality matches all these qualities. जो old man first रे आसीथिला से old, bent, pale and toothless थिला. Corn like this used to grow days in my time. Corn like this used to grow everywhere in my time. Grandfather कहिथिला. Pick out the incorrect pair. Recreation माने amusement ठीक. Stunt माने to stop something from growing thick. Untarnished माने impure. एटा भूल हे गला. Beware of माने be careful of. Untarnished माने pure. Impure नुहे. An army of soldiers dash in Pakistan border. Army of, herd of, group of. एटा थिले singular verb हबो. An army of soldiers is in Pakistan border. You had better dash this place. You had better leave this place. You had better leave this place. Okay. It has been raining dash 5 o'clock since 5टा बेल ठारू वर्षा होचे. My elder sister did not dash the marriage proposal. My elder sister did not agree to the marriage proposal. All the furniture of 5T schools is new. Furniture, jewelry, scenery, crockery एगुड़ाक singular verb ही नियंती. Mr. Prasanna Kumar Das went to London dash an aeroplane. N लगी जाइए तो on an aeroplane हवो. जदि a किंबा n किंबा the आर्टिकल रो व्यवहार हेतिबो ताले सबु जाक on हबो केवल बस आ बोट इन हबो. जदि a n दा किछि लथिबो ताले by हबो सबु जाक. by water, by aeroplane, by बस सबु जाक. ठीक. जदि तमरो आर्टिकल लाग गला a n दा ताले सेति पई on हबो. बस थिले इन ही थाना. Next, the village in dash I lived is surrounded by Chitrakoot hills. The village in which I lived. Do you object to what he say? What he says. What he says. Do you object to what he says? Okay. Next. Most people enjoy T20 cricket. Enjoy mane go in for. Go in for to enjoy. If men were fishes, they dash in water. They would live in water. Imaginary condition, second conditional, जो थे if clause रे past simple लगे, main clause रे would plus verb रो first form लगे. I knew her, it can be changed into passive. Passive कले कौन हवा? She was known to me. She was known to me. Okay. He said liar. It can be changed into indirect speech. Indirect speech kale he called me a liar. He called me a liar. Okay. Next one. The festival was celebrated with enthusiasm. Underlined phrase can be replaced by enthusiastically. My mother burnt her hand while she was cooking. While she was cooking. Cooking kala bele. Gandhi meditated a rebuke. Rebuke. Merited रो meaning कौन? Deserved. Merited रो अर्थ होचे deserved. My grandmother gave me 20 rupees. Pick out the indirect object. Gave whom? Me. जोटा object verb पाखरे थिबो से हबो indirect object. A scout said I go for a walk every morning. Scout said I go for a walk every morning. Indirect speech कले a scout said that he goes for a walk
every morning. He goes for a work. He goes, Scout said that he goes to for a walk. Two ta extra lekha jayiche, B hoba answer. He goes for a walk every morning. The businessman did not die. He was murdered. Passive re. Go first, dash you will miss the train. Or else. Fast jao, or else you will miss the train. Go fast or else you will miss the train. Sonu as well as his friends dash visiting Puri tomorrow. It as well as connect heichi, as well as with, in addition to, together with, एसबरे connect हेले verb agrees with the first noun. तो सोनू सहित agree हबो. सोनू as well as his friends is visiting Puri tomorrow. ये थिला सेट 5 रो आंसर. तो ए भली भाबरे हमें ए गोटिया क्लास रे तमरो सेट 1 टू धरिकी 5 पर्यंत समस्त एमसीक्यू क्वेश्चंस को डिस्कशन करनेले. आशा करछु तमानको ए क्लास भल लागिथिबो. जदि भल लागला निश्चित भाबरे आको लाइक करो, चैनल को एबे सब्सक्राइब करनो, जदि सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल रे सेट कर दबो. मु पुणी थरे तमानको नेक्स्ट वीडियो रे मिसिबे, नेक्स्ट क्लास रे मिसिबे. टिल देन बाय, हैव ए वंडरफुल डे. बाय एवरीवन.